Old male, software professional, presenting as primary pulmonary hypertension, and it's कब से 6 years 2016 कब से हो 2010 हाँ एंड उसके पहले कोई इवेंट हुआ था क्या लाइफ में कुछ ऐसा मेंटल इवेंट हुआ था किसी के लव अफेयर हो गया था ब्रेक हो गया था कुछ भी नहीं अपने आप चालू हुआ ये सब अपने आप मेरा स्टेमिना कम हो गया करके दौड़ रहा था हाँ डेली दौड़ रहा था सांस ज़्यादा खुल जाते एक दिन पूरा दौड़ रहा था ओके एकदम गिर गया मालूम नहीं पड़ा आसपास में कोई नहीं था उससे होश आने के बाद चोट लगी So ultimately in 2010 he was diagnosed with primary pulmonary hypertension. Normally it's very unusual कि इतना बड़ा disease primary pulmonary hypertension मतलब the pulmonary artery which connects the right heart to the lungs उसका isolatedly the pressure increases. The normal pressure is 25 millimeters maximum. इनका increase होके उसका reports में देखना पड़ेगा कितना है. So 80. Now where is 25 and where is 80? And this generally occurs in young adults, young males. 2010 में हुआ, this 2020-23, and slowly and steadily the symptoms kept on increasing. He was kept on drugs like bosantan and Viagra, sildenafil citrate जो है, जो standard allopathic drugs है. उसके बाद भी he has been deteriorating. ठीक है? The last time when he had come to me, उस time भी the symptoms were gross edema of feet because right heart failure हो गया. And we gave him Beretta Foss. As right heart failure हुआ था, तो breathlessness and chest discomfort. Breathlessness मतलब थोड़ा सा few feet चलने पे उसको सांस होता था, chest discomfort and now right ventricular failure and left ventricular failure. तो right ventricular failure के लिए the drug of choice, pathological prescription is Convalia majus, and left ventricle के लिए it is Strophanthus. Yeah, Idonis 4. ठीक है. Now his pumping capacity, अभी जो last echo कर रहा है pumping capacity भले 60%, but if you can see, you can अभी edema fit तो है but बहुत minimal है. Now what are the features of right side failure, right heart failure? एक है edema fit. लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर यू गेट कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, पल्मोनरी एडिमा, लंग्स आर अफेक्टेड. राइट हार्ट फेलियर के अंदर यू गेट एडिमा, पिटिंग एडिमा. सेकंड जेवीपी इज जुगुलर वेनस रेस, सी द जुगुलर, ठीक है, प्रेशर इज वेरी हाई, जुगुलर वेन. एंड हिपैटोमेगाली स्लाइड, पेनफुल, पैर पास में लो, slowly and his SpO2 is 90, ठीक है, pulse is 100 per minute, and tachycardia is a feature, very important feature of any heart failure, right or left ventricular failure, tachycardia होना. तो if you can control the tachycardia, आधा काम तो उसी में हो जाता है. इसीलिए अक्सर लोग digitalis यूज करते हैं because digitalis controls tachycardia, so heart has to work less, so the heart gets more rest, है ना. But anyway, we are going to start with him with Convalia आज पूरा दिन, and we are going to see कि SpO2 बढ़ जाता है. SpO2 should also increase ये, and symptomatologically he should get relief. अभी एक महीने में symptomatological relief significant मिला है, 1 या 2 महीने whatever time he's been taking this. हाँ? 2 महीने से, 2 months ago he had come to me, and there's a marked relief with symptoms. But अभी भी if you can hear, देखो यहाँ पर रहता है, if you hear the heartbeat, it is लप धप नहीं है. So this is called gallop. So लप धप is S1, S2 and तो S3 रहेगा. S3 gallop है उसको. S3 and S4 gallop है. जैसे घोड़ा ये कर रहा है. So one of the drugs for this gallop is definitely means heart failure. अगर ये gallop है मतलब heart failure है. He's also got PND, paroxysmal nocturnal dyspnea. मतलब he does not only have RV failure, he also has got LV failure, left ventricular failure का है. S3 gallop occurs in left ventricular failure. So today we start him with Convalia majus. आज full day देखते हैं and see how he responds. So our approach is mainly symptomatic cum pathological. Symptomatic mainly.
Let him settle down symptomatic. Since हमको पता भी नहीं कि why he is brought this disease. There's no exciting factor and there's no maintaining factor. ये अपन हिस्ट्री में अभी तक लिया तो उसमें पता नहीं चला. We'll talk to him, converse again and again, and see some event must have happened in 2008 and 9. तभी तो ये लाया. हाँ. ऐसा लग रहा है कि घोड़ा भाग रहा है. It is gallop. So this needs 3 drugs. Either Strophanthus, Convalescent imajalis, Adonis fir या Fasciolus. 4 drugs या Digitalis. ये 4-5 drugs ही रहेंगे. So since right heart failure is very predominant, we will go for Convalescent. ठीक है?